सारी कमियां निकलेगी। रीजन की लोगों को ट्रेनिंग लेने के लिए टाइम नहीं है। उस दिन सोचेंगे कि उसी दिन सारे जवाब एक साथ दे देंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। सारे जवाब एक साथ तब दे पाओगे जब रिपीट ट्रेनिंग मीटिंग्स वगैरह अटेंड करते हैं। बाद में जो भी कमियां रहेगी उसमें मेन कारण ये रहेगा कि स्टाफ अवेलेबल नहीं है। टोटल 50-60 के स्टाफ में से 6 लोग आप मौजूद हैं, इट मीन्स इट इज लेस देन 10% ऑफ द प्रेजेंस। नो डॉक्टर इज अवेलेबल, जबकि ज़्यादातर कमियां जो निकलती है डॉक्टर्स के एंड पे जो पेपर वर्क होता है उसमें निकलती है। दूसरी कमियां निकलती है हाउसकीपिंग के स्टाफ के अंदर, क्योंकि वो ठीक से जवाब नहीं दे पाते हैं या ठीक से काम कर नहीं पाते, और वो भी नहीं होते हैं मीटिंग के लिए, उनको भी आप लोग नहीं बुलाते हो। तीसरा जो कमियां निकलती है वो फार्मेसी में निकलती है, क्योंकि फार्मेसी वाले भी इस चीज़ में शामिल नहीं होते हैं। जो जो चीज़ों में कमियां निकलती है वो लोगों को आना चाहिए था और इस चीज़ को अटेंड करना चाहिए था, जो कि नहीं कर रहे मेरे रिपीटेड रिक्वेस्ट के बाद में भी। एनीवेज, आई विल स्टार्ट द टॉपिक straight forward, and then I will focus on my job, and whatever deficiencies will be because of not me. I am available, I am training, and you have to be present, you have to do what I say. If you don't do what I say, then it will not be my fault or my responsibility to make you attend the meeting, make you do correctly things. Because if you don't attend the meeting, don't listen to what is said, don't read what has been sent, don't go and do anything related to your work as per NABH, then there will be deficiency notified. So this is the code red. We discussed all of the code the last meeting. So code red covers the fire emergency. Firefighting team organizes smoke and fire drills. All staff takes part. Here I am very much clearly defining that all staff take parts. If staff is not aware, staff is not attending training, and staff don't listen what to be done, then staff will not be doing what to be done, and the whole thing will be disturbed. Even 6 people know that what to be done, but they may not be available at the point where camera is there. So whatever will happen will be deficient. I am 100% sure. Reason being that the staff is not available. So फायर कैन बी मेजर और माइनर। मॉक ड्रिल्स हमें साल में 2 बार करवानी होती है। लास्ट मॉक ड्रिल्स जो करवाई थी उसके बीच में और इसके बीच में 6 महीने का गैप होना चाहिए। रिपीट मॉक ड्रिल्स इंटरनली करवानी होती है, उसके लिए हम जरूरी नहीं है कि अवेलेबल हो, आपको सिस्टम बता दिया, ट्रेनिंग दे दी, और वो लास्ट ईयर में जुलाई अगस्त में कर दिया था। फायर कैन बी मेजर और माइनर। माइनर फायर आर 2 ways: indicative information or discover the fire individuals and fire indication detected in the fire control panel, or alarm system, fire alarm system, where you can see the when there is a fire and smoke or some heat area in the sensor system. So हॉस्पिटल में सबसे इम्पोर्टेंट जरूरी चीज है कि सेंसर्स लगे हुए होने चाहिए, फायर डिटेक्टर, स्मोक डिटेक्टर्स लगे हुए होने चाहिए, और अलार्म सिस्टम फंक्शनल होना चाहिए। अब मैं बीच में इस प्रेजेंटेशन को मिनिमाइज करके आप में से पूछता हूं कि अभी जो मौजूद है उनमें से कौन पर्सन है जो फायर इक्विपमेंट का मेंटेनेंस देखता है? गरिमा जी आप देखते हैं? श्याम जी आप देखते हैं? सर गणपत जी देखते हैं थोड़ा बहुत गणपत जी देखते हैं। तो जो देखते हैं उनसे मेरा कहना है कि अभी के अभी कंफर्म करो मेरे को, जब तक की मीटिंग खत्म हो उससे पहले, कि आपके स्मोक डिटेक्टर, फायर डिटेक्टर्स और फायर फाइटिंग सारे इक्विपमेंट परफेक्टली इंस्टॉल्ड है और फंक्शनल है। मैं सिंपल एक ही सेंटेंस में यही चीज कहूंगा कि प्रैक्टिकल जो चीज ट्रेनिंग के साथ में क्या चीज है कि प्रैक्टिकल मेरे को क्या देखना है कि प्रैक्टिकली आपका सिस्टम सारा का सारा फंक्शनल है या नहीं है। अगर वहां पे
कोई भी चीज असेसर ने, ऑडिटर ने बोला कि अगरबत्ती जलाओ और उस वक्त वो फायर डिटेक्टर जो कि स्मोक डिटेक्टर होता है उसमें आवाज नहीं आई, अलार्म नहीं बजा, तो वहीं पे एनसी लग जाएगी। गणपत जी आप नहीं सुन रहे, मेरे को लगता नहीं है, आप पर पॉकेट में फोन डाल करके और घूम रहे हैं। गणपत जी सुन रहे हैं, वो म्यूटेड है इसलिए उनकी आवाज आपको आ नहीं रही है वापस। हाँ फिर ठीक है। तो ये स्मोक डिटेक्टर्स आपको चेक करने हैं और बाकी के फायर इक्विपमेंट्स वगैरह इंस्टॉल किए हुए वो सब चेक करके और कंफर्म करना है कि दीज आर फंक्शनिंग वेरी वेल। सो वी विल गो फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट पॉइंट वेयर मेजर एंड माइनर फायर होती है, डिटेक्शन सिस्टम होता है, उसके थ्रू, डिटेक्शन के थ्रू हमें पता लगता है कि फायर, आग लग गई है। अब ये पता लग गया आग लग गई है तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? अलर्ट। अलर्ट का मतलब हुआ कि आपको अनाउंस करना है, इन्फॉर्म करना है कि आग लग गई है। रिसेप्शन विल इन्फॉर्म एंड अनाउंस कोड रेड। कैसे अनाउंस करना है गरिमा जी? अनाउंस करके बताओ मेरे को, बोल करके बताओ अभी माइक पे। हाँ सर, व्हाट? कोड रेड अनाउंस कैसे करेंगे? सर क्या, आई डोंट नो। आप रिसेप्शन पे हैं क्या? नो सर, रिसेप्शन में पूजा है। तो रिसेप्शन वाला कहाँ है आज? वो सर वर्क कर रही है अपना। ये किसका वर्क है जो अभी चल रहा है? मेरा पर्सनल वर्क है क्या? जो अभी ट्रेनिंग वाला वर्क है वो मेरा पर्सनल है या किसी आप में से किसी का पर्सनल है जो सारे लोग नहीं आए, या हॉस्पिटल का काम है? कोई भी रिसेप्शन पे ऑनलाइन आएगा क्या? सर आप मुझे बता दीजिए, आई ऑल्सो सिटिंग रिसेप्शन। ओके, सो कल भी बताया था, वैसे तो आपको याद होना चाहिए, यू हैव टू से और अनाउंस द कोड इन माइक 3 टाइम्स। कैसे अनाउंस करना है? कोड रेड, ग्राउंड फ्लोर। कोड रेड, कोड रेड, कोड रेड। ऐसा नहीं, पूरा सेंटेंस बोलना है 3 बार। कोड रेड ग्राउंड फ्लोर और रूम का नाम बताना है। कोड रेड ग्राउंड फ्लोर लैब, कोड रेड ग्राउंड फ्लोर लैब, कोड रेड ग्राउंड फ्लोर लैब। ऐसे 3 बार बोलना है और पूरा सेंटेंस बोलना है। कोड रेड एक्टिवेटेड ग्राउंड फ्लोर लेबोरेटरी, कोड रेड एक्टिवेटेड ग्राउंड फ्लोर लेबोरेटरी, कोड रेड एक्टिवेटेड ग्राउंड फ्लोर लेबोरेटरी। ठीक है? ओके ओके हाँ, सर। दैट इज हाउ। कोई भी कोड अनाउंस करना है तो इसी तरह से अनाउंस करना है। 4 वर्ड है। कोड रेड पहला, एक्टिवेटेड दूसरा, हाँ। फ्लोर का नाम तीसरा और रूम का नाम या जगह का नाम चौथा। ठीक ओके। है? 4 सेक्शन में ये इंफॉर्मेशन है। कोड रेड मतलब कि जो कोड है उसका नाम बोलना है। फिर एक्टिवेटेड मतलब कि एक्टिव हो चुकी है, दूसरा शब्द। तीसरा शब्द है फ्लोर का नाम और चौथा शब्द है रूम, एरिया, कॉरिडोर या जगह का नाम उस फ्लोर पे। ठीक है? सो कोड रेड एक्टिवेटेड ग्राउंड फ्लोर लेबोरेटरी, कोड रेड एक्टिवेटेड ग्राउंड फ्लोर लेबोरेटरी। ऐसे 3 बार अनाउंस करना है और इस चीज को 5 मिनट के बाद में वापस फिर से अनाउंस करना है। क्या करना है? फिर से अनाउंस करना है और रिपीट तब तक अनाउंस करना है जब तक कि कोई आपको डीएक्टिवेट करने के लिए नहीं बोल रहे। एटलीस्ट मिनिमम 5-5 मिनट के गैप में 3 बार अनाउंस करना है। जब अनाउंस करोगे तो 3 बार बोलोगे और 5 मिनट के बाद में फिर से 3 बार बोलोगे और 5 मिनट के बाद में फिर से 3 बार बोलोगे। आ गया समझ में? ओके डन सर। जी सर। ओके, बाकी सबको भी समझ में आ गया? क्योंकि बाकी को ये चीज जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि अनाउंसमेंट होगा तो क्या बोला है वो समझना है।
फिर और क्यों जरूरी है कि वो बोलने के बाद में उनका पर्टिकुलर, उस पर्सन का जिसने सुना है, उसका क्या रोल है। डॉक्टर का अलग रोल होता है, नर्सिंग स्टाफ का अलग होता है, सिक्योरिटी का अलग होता है, फायर फाइटिंग टीम का अलग होता है, रिसेप्शन का अलग होता है, इलेक्ट्रीशियन मेंटेनेंस वाले हैं उनका अलग होता है, लिफ्ट ऑपरेटर है उनका अलग होता है। तो सब लोग अपना अपना काम करें, उसके लिए जरूरी है कि उनको पता होना चाहिए कि क्या काम है। अब मीटिंग में तो मौजूद नहीं है तो मैं किसको बताऊं काम। क्लियरली मैंने लिखा था कि होल हॉस्पिटल नीड टू बी कनेक्टेड, कहीं से कहीं। चलो मैं अपना काम करता हूं, जो मौजूद है मैं उनको बता देता हूं। अब उसमें कमी रहेगी तो रहेगी, उसमें कोई भी चीज मैं अपनी तरफ से अपने स्टाफ को पकड़ के नहीं ला सकता है, नहीं कोई मेरी तरफ से स्टाफ मेरे कहने पे आएगा, क्योंकि मैंने तो कह दिया। चलो अलर्ट करना है, अलर्ट करने के साथ में जो पर्सन देखेगा, जो नियरेस्ट पर्सन है उस आग के, वो पर्सन फर्स्ट स्टेप में उस एरिया से ज्वलनशील चीजों को, अपने आप को और पेशेंट्स को दूर करेगा। क्या करेगा? उस एरिया से लोगों को, वस्तुओं को, अपने आप को, जो छोटा सा एरिया जहाँ पे स्मोक आई है, जिसने डिटेक्ट किया है, जिसने फाइंड आउट किया है, वो उस आग से सारी चीजें दूर करेंगे। अब इतना टाइम नहीं होता है, इसीलिए जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको दूर करना है। ठीक है, नेक्स्ट, दूर कर दिया। अगर आग छोटी है तो एक दूर कर रहा है तो दूसरे को क्या करना चाहिए? नियरेस्ट अवेलेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स जो अवेलेबल है, जिसने डिटेक्ट किया वो खुद भी कर सकता है, लेकिन अगर कोई सामान हटा रहा तो किसी को फायर एक्सटिंग्विशर पकड़ना है, और वो फायर एक्सटिंग्विशर चलाते कैसे, उसकी ट्रेनिंग हम कर चुके हैं ऑलरेडी, उसकी ट्रेनिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो वो जो से करते हैं वैसे ही आपको एक्सटिंग्विश करना है। स्टाफ ऑलमोस्ट वही है, तो एक्सटिंग्विशर चलाना आना चाहिए। पहले डिटेक्ट हुआ, फिर आपने उस आग के आसपास की चीजें हटाई, साथ में ही दूसरे पर्सन ने अनाउंस, रिसेप्शन पे फोन किया, रिसेप्शन ने अनाउंस किया, साथ में ही जहाँ पे आग लगी है वहाँ पे दूसरा, तीसरा, चौथा पर्सन जो बैठा है, खड़ा है, वो उस एरिया को कंटेन करने की कोशिश करेंगे, उस आग को फर्दर दूसरी जगह ना फैले ऐसी व्यवस्था करेंगे, और उसके लिए वहाँ के आसपास के ज्वलनशील चीजों को हटाएंगे और खाली जगह क्रिएट करेंगे, ताकि कम से कम चीजें जले, कम से कम आग फैले। ठीक है, तो हॉस्पिटल फायर फाइटिंग टीम, हमने अभी बात की कि जो आग है उसको बुझाने के लिए हर किसी का रोल होता है, और उसमें सबसे बड़ा रोल होता है हॉस्पिटल फायर फाइटिंग टीम में। तो इसमें भी टीम में भी 3 डिवीजन है: इमीडिएट रेस्पॉन्स टीम, इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम एंड एग्जीक्यूटिव टीम। अब जो मैंने बोला इमीडिएट रेस्पॉन्स टीम, जो कि पॉइंट 1 है, वो कौन होते हैं? वो पर्सन होते हैं जो उसके आग के सबसे करीब है, और जिन्होंने आग को पहली बार देखा है, और जो सबसे पहले आग से अफेक्ट होने वाले हैं, उन पे आग का सबसे पहले फर्क पड़ने वाला है, वो होते हैं इमीडिएट टीम। कंसिस्ट ऑफ पर्सनल अवेलेबल ऑन द स्पॉट लाइक सिक्योरिटी सुपरवाइजर, सेफ्टी इंचार्ज, ड्यूटी ऑफिसर्स, फायर ऑफिसर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, जो कि बड़ी टीम होती है, और हॉस्पिटल के किसी भी भाग में बड़ी आग लगी होती है, इमीडिएट रेस्पॉन्स टीम को सपोर्ट करने के लिए है, जल्द ही वो पहुंचेगी। is responsible for measure including the security supervisors, executive security staff, housekeeping staff, resident doctors, nurses, lift operators, electrician, condition operation, conditioning operator और UT and etc etc, एयर कंडीशनर उसके ऑपरेटर्स, सारे के साथ टेक्निकल टीम है।
जो थर्ड पार्ट है वो है एग्जीक्यूटिव टीम, मतलब कि सिक्योरिटी ऑफिसर, मैनेजर, हाउसकीपिंग, डीएनएस, एएनएस, कंसल्टेंट, इसमें ये लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे डिसीजन लेने में जो टॉप मैनेजमेंट है उनकी हेल्प करते हैं, तो टॉप मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव टीम का हेड होते हैं। So now is the protocol. Fire prevention protocol में fire risk areas in hospital are identified, जैसे जनरल रूम, सबस्टेशन, मेडिकल गैस रूम, मेडिकल रिकॉर्ड रूम। इस एरिया में स्मोकिंग नहीं अलाउड होनी चाहिए और फायर एक्सटिंग्विशर्स जरूर होना चाहिए और इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट्स वगैरह की गुंजाइश कम से कम होनी चाहिए। At specific places, first aid fire appliances are provided. स्मोक डिटेक्टर के साथ में फायर एक्सटिंग्विशर्स या फर्स्ट एड एप्लियंसेस। फर्स्ट एड एप्लियंसेस, फायर फर्स्ट एड एप्लियंसेस से क्या मतलब है, जो आग बुझाने के जो सिलेंडर्स रखे हुए हैं वो। इन केस ऑफ एनी फायर इंसिडेंट, द फॉलोइंग एक्शन इज टू बी टेकन. ट्राई टू पुट इट ऑफ, shout for help in case of the not being able to put it off, and if it is an electric fire, inform telephonically or cut off the power supply. अगर आग की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ है तो एमसीबी है उसका बटन ऑफ करना और टेलीफोनिकली इन्फॉर्म करना, अगर आपके आसपास नहीं है, दूर है तो कटिंग ऑफ द पावर सप्लाई। ठीक है। In case of the fire in the hospital building and surrounding area, following action is to be taken. Which action? The immediate try to put it off. If not extinguished, shout for the help. Switch off the electric supply. Inform telephonically. Shift the patients to the safer places. If fire has not been extinguished, without panic, direct the patient to safer locations through the fire escape route. Fifth point. Use fire escape route for the going out of the hospital building. Fire emergency escape route is drawn and displayed at all floors, जो कि हमने पिछली मीटिंग में डिस्कस किया था, पहली मीटिंग में डॉक्टर अंकित के साथ में। And locations for the information. जो escape route है उसके हिसाब से ही जो है आपको evacuation या खाली करना है। Firefighting instructions. The firefighting is an emergency requirement and is called a code red. The hospital is to be alerted about the public announcement system and ban fire. वो repeat हो रहा है जो मैंने बोला, fire accidents may occur at any time. If these fire accidents are not attended immediately, it can cause loss of the life and property. In case of the fire incident is noticed in the hospital area, the following action is to be taken. First, try to fit the electric equipment, shout for the help. अब इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को फुट ऑफ करने का मतलब है स्विच ऑफ करना। कौन कौन से इक्विपमेंट है? इलेक्ट्रिक से चलने वाले बड़े बड़े इक्विपमेंट, जैसे कि लिफ्ट को बंद करना होता है। बड़े बड़े इक्विपमेंट जो कि लाइफ सेविंग कंडीशन या क्रिटिकल नहीं है, उनको सबको ऑफ करना, एक्सेप्ट वेंटिलेटर्स एंड दोज therapy related equipments which under which the patient is undergoing any therapy, क्योंकि उनको ऑफ करोगे तो पेशेंट भी ऑफ हो जाएगा। ठीक है। तो and then security supervisor will activate the code red. अब security supervisor अगर आपके हॉस्पिटल में नहीं है तो जो भी पर्सन, जिस पर्सन को भी लगता है कि आग लग गई है जो कि बहुत बड़ी है और कंट्रोल में नहीं आएगी, तो कोड रेड अनाउंस करवाना है। सिक्योरिटी सुपरवाइजर विल इन्फॉर्म ऑल द अबव पर्सनल and reach the fire site without delay. It is the electrical file. If it is an electric site, supply should be switched off. Informing the duty electrician. Water will be used if it is confirmed as a solid fire. Solid fire के लिए पानी यूज करना है, इलेक्ट्रिक फायर है उसका स्विच ऑफ करना है। If evacuation is required, the evacuation plan is to be activated. The security supervisor will maintain a record of the fire accident by noting the date, time of the call of the fire, dousing the fire, loss, life and property if any. If the fire is not controlled, the matter to be informed to civil fire station, nearest fire station for the immediate help, or calling at
101 or 100, and that will connect to the fire station. The correct location of the fire to be informed. The firefighting team shall reach to the place of the fire without delay and organize the firefighting after the getting this warning of the code red. Now अगर आग को लगने ही नहीं देना है तो क्या क्या करना है हमें? Do not store inflammable material, petrol, gas, LPG in hospital room and building. Do not use kerosene stove, burner, gas stove in hospital room and department. Spirit lamps used in the laboratory should be placed in the safe place and put it off after the use. Do not use the candle, oil lamp, light in rooms and department. Do not store the loose papers, files and old reports in the cardboard boxes. The old record room should be properly ventilated and electrical line protected against the fire. All the important departments will be provided with the first aid fire appliances, and do not leave the remains of the used matchsticks, candles, cloth pieces, etc. in the floor area. Extinguish and throw these items in dustbin only. Put off electric supply to the rooms in case any spark is noticed and inform the duty electrician. While refueling the diesel tank of the generator, take fire precaution and do not bring any lighted material near to the refueling point. Put off all lights, fans and electric equipment and remove equipment connected from the plug while locking the room after the run. So these are the points which are important to prevent the causation of the fire. Emergency evacuation plan should be well decided and exit pathway should be known to the all of the occupants of the building. Alert all the inmates one by one. अगर कोड रेड अनाउंस हुआ है तो पेशेंट्स को और अटेंडेंट्स को नहीं पता है कि क्या हुआ है. आपको क्या करना है, कोई भी जहाँ पे रूम्स है वहाँ पे पेशेंट्स और अटेंडेंट्स है उनको एक एक करके पर्सनली इन्फॉर्म करोगे, चिल्लाओगे नहीं, साउट नहीं करोगे, क्योंकि आप उस फ्लोर के इंचार्ज हो, आप उस फ्लोर में हो. Evacuate all the patients first and help the stretcher trolleys to be reinforced. The medical documents of the particular patient should be sent along as well. अगर वो नहीं गया तो immediate after the fire at the assembly area patient का इलाज नहीं हो पाता. Only route to be used to calculation such a patient should be the hospital staircase. The lift should not be used in case of the fire. Ambulatory or the semi-ambulatory patients should be evacuated one by one using wheelchairs. The patient's medical documents should be sent along. The evacuation should be done in orderly manner without causing confusion or panic. These patients will occupy the vacant beds on the other floors except the affected floor. The casualty observation beds or crisis management bed or disaster ward beds on the ground floor shall also be used. The duty personnel will leave the emergency affected floor last after ensuring that all the patients, their personal belongings and medical documents are safely evacuated. Firefighting training to be conducted in the organization and mock drills should be done twice a year with the help of the guidance of the local firefighting forces. So all the staff take part in the drill, which gives emphasis of the safe evacuation of the patients and occupants in the affected areas in the hospital in general as the firefighting and containment activities is under progress. So, in case of the major fire with partial or full evacuation, the medical superintendent manager admin as to whether to evacuate or not to evacuate decision to be taken. If it is not to be evacuated, this could be the cause of the fire has been extinguished or can be extinguished by the ERT or emergency response team without any further spreading.
If need a partial evacuation, the patients are transferred within the hospital. There are two levels of the partial responses. One is the horizontal and another is the vertical. The horizontal or first response patients move occurs horizontally to one side of the set of the fire barrier doors to the other sides. Now, what are the fire barrier doors? The doors which separate two segments of a floor, which contain the fire movement of the one segment to another. Vertical movement of the patient is a safe area to the another floor outside the building. This could be because of the no danger of the fire spreading, but there is the sufficient smoke to cause the discomfort to the patients in the immediate area, or because of it's not contained, the ART will be able to bring the fire under control without the under spreading. A partial evacuation will normally be up to 2 floors above and 1 floor below the floor. Suppose करो कि फायर हमारी लगी है वो फर्स्ट फ्लोर पे लगी है, तो सेकेंड थर्ड फ्लोर एंड ग्राउंड फ्लोर खाली करना ही पड़ेगा. ग्राउंड फ्लोर पे लगी है तो बेसमेंट एंड फर्स्ट सेकेंड फ्लोर खाली करवाना पड़ेगा. तो 2 फ्लोर ऊपर और 1 फ्लोर नीचे और उस फ्लोर, मतलब कि टोटल 4 फ्लोर को खाली करना होगा इन केस ऑफ partial evacuation. Now, duties of the staff involved in the fire are depend on the what are their job role. The major fire with or without evacuation, person discovering the fire gives the security control room or reception their name, department, exact location of the fire, and try to beat the fire without panic with the assistance of the colleague in the close vicinity, pick up the fire extinguishers and from the nearest point. The ERT team will available on the floor immediately. Rest of the members will immediately rush to the location of the fire once they receive a telephonical message or announcement, pick up the fire extinguishers from the nearest point, fight the fire, assist the fire tenders, and will assist the executive team in any other task assigned to them. The initial response team is the main team, security supervisor, fire officer, or duty officer on that floor if hospital is big. If they are not available, any person who is in charge of that floor will act. The supervisor or in charge of that floor will report about the extent and type of the fire and firefighting assistant to other investigators. Security supervisor or the in charge of that floor or ward will be informing all, and the person who is carrying all the keys to the areas and floors and rooms should be with the initial response team as well as ERT team. The lift operator will carry emergency elevator keys, and the elevator, if somebody is trapped in the elevator because elevators with electric supply will be switched off, so they can open the lift in between and evacuate the person who is trapped in the lift. The supervisor at the location of the fire will inform security control or to the reception to give information to the ERT telephonically and medical superintendent, management, administration, or other engineer or maintenance personnel. The executive has a major role, assess the state and extent of the fire, suppress the panic, and supervise the emergency response. They ensure that water, power are in readiness state to cater for an emergency. The chief maintenance engineer or maintenance personnel, safety engineer or maintenance supervisor, and they inform the disaster and emergency preparedness committee, and the assist fire brigade in the extinguishes the fire, control of an isolated power or gas machines as required. The chief maintenance engineer, safety engineer, is responsible for the same. Staff will be called for shifting of the patients from ICU and wards. If required to be transferred, communication will be sent to the nearby hospitals as per the facilities required for the patients and their availability there.
Disaster and Emergency Preparedness Committee exercise the command and supervision over the entire emergency team and is responsible for its overall performance. He may alter any or all parts of this plan on the spot and part the situation and demands. Emergency Control Center should be established and is also under fire with the ECC and will be operated in the security control room. If there is no security control room, maintenance room, or if the near the MS room or wherever we can find the place. Issue the instruction to requisition fire tenders, and if situation in a warrant, to give instructions regarding the evacuation of the patients and staff if required. So duty officer and security control room has also a responsibility. The duty officer, a member of the initial response team, reaches the location, always carry the floor master keys and fight the fire, and in case of the evacuation, reports the emergency, act on the behalf of the committee, perform the such duties, and emergency committee may assign to him when not occupied elsewhere. He is to remain with the evacuation team. Once the message about fire is received, security officer at the security control room immediately flashes the message on walkie-talkie or code security supervisor, duty officer or fire officer, and the security officer at the location of the fire will inform the security control or security in charge or security supervisor to ERT telephonically and medical superintendent manager and other personnel part of the executive team. The security officer or security staff, as informed, have many roles in evacuation, and these are the detailed here. He will always carry the torch. Head of the security will be a member of the executive team, take part in the firefighting, assist in ERT, keep all managers informed, suppress the panic, clear parking areas, arrange remote tap persons, inform the local police, provide all assistance in the evacuation, depute or deploy the security staff to the required areas, prevent the pilferages, and guard all floors to prevent the theft of the customers' baggage and hospital property. Print of the attendance details of the hospital staff and will be required to take a roll call of the employees at the assembly point. So there are the 2 points where whenever you leave the ward or your area, you should know who are in your area, and whenever you go to the assembly area, you must again ensure that all the people in your area is safely evacuated. If any person is not visible and trapped in the building, then you have to inform the rescue team to evacuate those people who are still trapped in the building. Provision of the firefighting equipment is, if not available at the fire location, and cordon of the main gates area, restrict the entry only to the authorized persons and guide the fire tenders near to the location. So the chief engineer and safety engineer or maintenance staff has a responsibility. He will also carry the emergency elevator keys, and chief engineer will be the member of the core emergency, cut off the power, cut off the AC, ensure the water availability, take part in the firefighting. Engineer plant should be manned all the time. All AHUs in the fresh air and exhaust fans should be switched off. Shut off the main LPG line. All LPG cylinder to be disconnected. Other rest of the engineering staff should reach to the site of fire to the switch off the electric affected areas, coordinate with the local fire service, and ensure the water and emergency power is on the receiving of the direction to the announcement of the for the public announcement system. So under mentioned, the useful instruction. Reception act as the information center, keep the customers specified, announce about the code red. Take out the printout of the in-house patients list, prevent the panic by the individual speaking, update the elevation plan with the customers, organize the search and evacuation team of 2 persons. Lobby, may I help you? Desk, and maintain the coordinate with the CMO and carry the department logbook, and the must to be positioned the telephonic exchange, and ensure that staff remains in the respective places of the duty, and only on instruction of the medical superintendent carry out the own department evacuation. So reception will be evacuated last.
रिसेप्शन का इंफॉर्मेशन पॉइंट है और मोस्टली दैट टू बी इवैक्यूएटेड लास्ट एंड ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द मेडिकल सुपरिटेंडेंट और सीनियर मोस्ट पर्सन ऑफ द हॉस्पिटल। Executive housekeeping or other people will help in firefighting, help in patient movement, help in the goods movement, help in the documents and the other activities related to them. They will conduct. फूड एंड बेवरेजेस, किचन वगैरह अगर कोई है कैफेटेरिया, उसके एरिया का जिम्मेदारी उनका होता है। एलपीजी सिलेंडर्स बंद करना है, स्विच ऑफ करना है, इलेक्ट्रिक से गैस वगैरह किचन को जितने भी ज्वलनशील पदार्थ है उनको मूव करना है फायर से दूर। नर्सिंग स्टाफ का जिम्मेदारी है कि पेशेंट्स को मूव करे, पेशेंट्स का रोल कॉल दे और पेशेंट्स को शिफ्ट करवाने में प्लानिंग करे। फ्रंट ऑफिस का काम है ड्यूटी ऑफिसर, कीप कस्टमर्स काम, डायरेक्ट द कस्टमर्स, डू नॉट क्रिएट पैनिक एंड डायरेक्ट द प्रेस रिपोर्ट्स टू द एमएस। अदर स्टाफ्स हैज देयर ओन doctors etc. Take care of the patients who are already and take care of the patients who got injured during the fire, and parking staff need to be clear all the parking lots and this allow the other new parking vehicles and fire tender movements should be ensured by the parking staff. This is it. नमस्कार, आप सबको इस मीटिंग में कैसा लगा? गोविंद, श्याम, जया, गणपत एंड अजय, गरिमा जी गायब हो गए। अच्छा लगा सर, थैंक यू। इतना डिटेल में हमारे पास में बहुत बार टाइम नहीं होता है, लेकिन आज जरूरी था, ज्यादा लोग सारे लोग होते तो अच्छा रहता। ठीक है, दैट वाज द कोड रेड और फायर फाइटिंग का। तो कोड रेड अनाउंस करवाना है, कोड रेड को एग्जीक्यूट करना है और किस किस की क्या ड्यूटी है वो सारा का सारा मैंने अभी बता दिया। ठीक है, इससे ज्यादा डिटेल में मैं कुछ नहीं बता सकता। गरिमा जी बीच में गए, वो मेरे को अच्छा नहीं लगा। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लेने वाले हैं वो टॉपिक होगा इन्फेक्शन मेडिकेशन सेफ्टी। इसमें फार्मेसी चाहिए, नर्सिंग स्टाफ चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए। ठीक है, ये तीन, और फार्मेसी, नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स और उसके साथ में टेक्नीशियंस जैसे कि ओटी टेक्नीशियन, इमरजेंसी टेक्नीशियन या किसी भी तरह का जो पैरामेडिकल स्टाफ है जो कि पेशेंट्स की दवाई ले के अंदर काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें अजय जी का शायद कम रोल है मेडिकेशन सेफ्टी में। अजय जी, आपके एरिया में जो भी लैंप वगैरह है उसका फायर से रिलेटेड जो भी चीज़ें आई है, प्लस अपने एरिया की फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है कि नहीं आसपास, कहाँ पे है, पेपर वर्क बचाना कैसे है, इक्विपमेंट्स कैसे बचाना है, लैब के अंदर CO2 सिलेंडर होना चाहिए। कौन सा सिलेंडर होना चाहिए अलेंडर अजय जी? एक तो ABC टाइप का सिलेंडर होता है, दूसरा जो सिलेंडर होता है ना आग बुझाने के लिए वो तो होता है CO2 टाइप का। CO2 वाला सिलेंडर काम आता है उन इक्विपमेंट में जिसमें पाउडर वाला सिलेंडर यूज नहीं करना होता है, क्योंकि अगर किसी इक्विपमेंट पे आग लग गई इक्विपमेंट के आसपास तो उसमें अगर पाउडर डाल दिया तो वो इक्विपमेंट चाहे वो 10 लाख का है, 15 लाख का है, 10,000 का है, खराब हो जाएगा। पाउडर उसको जमा देगा, ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो इक्विपमेंट के लिए, इलेक्ट्रिक फायर के लिए CO2 वाला सिलेंडर चाहिए होता है। ठीक है, सो दैट्स इट अबाउट द टॉपिक फायर इमरजेंसी। और जो नेक्स्ट टॉपिक मैं लेने वाला हूँ वो है मेडिकेशन सेफ्टी। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, टाइप ऑफ द मेडिकेशन एरर्स। अब इस टॉपिक में मैंने जो कैटेगरी बताई उनमें से कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? गणपत है, गोविंद है, श्याम जी है, जया जी है,
और इन चारों के पास में और कौन कौन लोग हैं? अजय जी, अभी ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो आपके काम का नहीं है, ठीक है? So I will continue. इसमें हमें एडवर्स ड्रग इवेंट्स, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, साइड इफेक्ट्स एंड मेडिकेशन एरर को जानना है। एडवर्स ड्रग इवेंट वो होते हैं जो दवाई देने से गलत कुछ हो जाता है पेशेंट के साथ में। एडवर्स ड्रग रिएक्शन वो होती है जो कि एक नॉर्मल जो इंटेंडेड एक्शन होता है वो नहीं होता है, अनएक्सपेक्टेड, अनवांटेड और अननोन इफेक्ट होता है, उसको बोलते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन। साइड इफेक्ट नॉर्मल इफेक्ट्स ही होते हैं किसी में, जो मैन इंटेंडेड इफेक्ट होता है उसके अलावा पेशेंट को कुछ हो जाता है तो उसको बोलते हैं साइड इफेक्ट्स। और मेडिकेशन एरर उसको बोलते हैं जिसमें नॉर्मल डोज रूट बाकी की सारी चीज़ें नॉर्मल ना रह करके कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसको मेडिकेशन एरर बोलते हैं। Adverse drug events or ADs are medical related incidences that results in the harm to a patient, any injury caused by the medicine or lack of the intended medications, and adverse drug reactions and overdoses. Overdose reduction and discontinuation of drug therapy considered to be the part of this. Adverse drug reactions are unexpected, unintended, undesired, excessive response to a drug with or without injury, arising from the justified action where the correct process was followed for the context in which the event occurred, directly caused by the drug at the normal doses during the normal uses. Side effects are the known effects other than the primary intended related to the pharmacological property of the drug. Medication errors are the failure to carry out the plan action as intended or application of the incorrect plan. Any preventable event that has the potential to lead to the inappropriate medication use or patient harm during the prescribing, prescribing, dispensing, administering, adherence, and monitoring of the drugs. The medication error that are stopped before the harm can occur are sometimes called the near misses or the more formally a potential adverse drug events. The ADRs, ADEs, and NEs have an interrelated relation. Medication errors can be ADEs and ADRs are always ADEs. Problem is that millions of the people dies per year. Most of the errors goes unnoticed, and errors caused by death each year more than the AIDS and cancers in USA and anywhere else. The process under which the errors occurs are selection of the procurement, prescribing, preparing or dispensing, administering, monitoring, etc. The selection or procuring, establishing formulations and prescribing is done by the doctors, preparing and dispensing is done by the pharmacist, administration is by the nurses, technicians and doctors, and monitoring is done by the all stakeholders including patients and relatives. So error can happen anywhere. During prescribing error. During dispensing error. During administration error. And during monitoring, post-administration follow-up and adherence related. Prescribing, transcribing, dispensing and administration. 4 types of the errors. Mostly errors are prescribing or administration on type. Other types are the dispensing and prescribing type. Prescribing errors occurs because of the prescriber gives a dose, strength, route, quantity, indication, and prescribing contraindicated drugs. This definition can be further expanded to include failure to comply with the legal requirements of the prescription writing.
Prescribing errors contributing factors are illegible handwriting, inaccurate medication history taking, confusion with the drug name, inappropriate use of the decimal points, use of the abbreviations, and use of the verbal orders. Some of the examples we can discuss, but you already know because in the day life, writing is 100% error prone. If we are not writing in capital, we are using short forms, or we are using in running or cursive writing, and we are using the avoidable, decimal points, then we can avoid the errors. Like this one, monopril and some milligram is written. Actually, it is the 40 milligram instead of 10 milligram, but because of the crease in the paper, it looked like it is a 10 milligram. The dispensing errors occurs because the dispenser, the pharmacist, make error process during the process of the dispensing. It is around 24% of the cases. These errors include the selection of the wrong strength of product, and this occurs primarily when more than two drugs have a similar appearance or similar names. Look-alike and sound-alike drugs. So look-alike and sound-alike drugs have a organ, and that the storage facility has been created to minimize that. Defined as a discrepancy between the drug therapy received by the patients and the drug therapy intended by the prescriber. Drug administration is associated with one of the highest risk areas in nursing practice, and the drug administration errors largely involve the error of the omission, where the administration is omitted due to the variety of the factors, and other types of the drug administration errors include the wrong administration techniques and administration of expired drugs and wrong preparation administered. The administration errors contributory factors are failure to check the patient's identity and historical similar preparation in similar areas, and noise interruptions while undertaking a drug round, or poor lighting, etc., etc. The administration errors examples are the patient had an equal epidural line of the pain management and a peripheral IV line containing insulin. The reasons for the medication errors: ambiguous system designated on the labels or the packaging, drug product cultures and equipment failure, and illegible handwritings, improper transcribing, the inadequate trained personnel, inappropriate abbreviations, labeling errors, excessive workload, lapses in individual performance, medication available. Step 1, problems should be identified. We should know that the error can happen. And once we know that error can happen, we have to identify the risk and manage it. Then identification of the risk or medication is that we have to manage the high alert, error prone abbreviation, look-alike and sound-alike. High alert medications are medications which have a low therapeutic index and cause more harm if small changes in the dose. Decimal points. These are the 10 medication involved in the high alert, and that is insulin, morphine, potassium, albuterol, heparin, pancreatin, ciprazone, acetaminophen, warfarin, furosemide. The strategy is to reduce the risk from the high alert medications, limit the access to these medications. Standardly, the ordering procedure, independent double check method is to use during the process. Procurement process of the prescribing, dispensing and administration of a high alert medicine. Error-prone notations or abbreviations should be avoided. Ambiguous medical notations are one of the most common abbreviation notable cause the medication errors. Misinterpretation may lead to the mistakes that results in the patient harm. Delays start the therapy due to the time spent for the clarification. Implement do not use list, which is given by ICMP, and the link for that is available here. For list of the error-prone notations, the notations used never be used. U, mu, QD, OD, BD, TD, these are the notations should not be used. Trailing zeros, neg, decimal point, CC, MS, less than, more than, U, at, and slash. Plus, DC, discharge, DC, disconnect,
DC, discontinue. These are the examples of the errors. Reduced person-centered approach should not be applied. System-centered approach should be applied. Switch cheese models of the system errors should be taken into consideration. Person-centered approach should not be applied. System-centered approach says that the error expected to occur. Errors are viewed as the end of the result, not the cause. There is a potential for the error, recurring errors. The system-centered approach says that solutions are based on the belief that the condition may be changed rather than the focusing on the changing the human. Barriers and safeguards should be implemented to help the prevent errors. It is essential to focus on the how and why on the system and not on how which individual. Methods used in minimizing or reducing the medical errors that the prescribing pharmacy and nurse are forcing the function as well, automation and computerization, standardization protocol, checklist to double check the system, rules and policies to be included, education and information to be made available, and be more careful, be more vigilant. Means if we write down be more careful and more vigilant means the chances of error prevention is less, but the forcing function that has the topmost effectiveness, most effective form is the forcing function, the least effective that we say the staff to be more careful to be here. Automation is second most and standardization protocol. So we can do this part, standardization protocol, checklist and rules and possible education and information. These are the things we have to do, and that is why I'm training you to implement some policies and procedures which are already implemented, but this is the revision of the what has been taught to you. Steps to minimize medication errors: use pharmacy system that will not fill any order unless allergy information. Use the computer order entry with basis checks. Remove dangerous or IV drugs. Limit choice of the available drugs. Limit dosage strengths and concentration for the each drugs. Mix IVs in the pharmacy. Steps to minimize the medication errors: use a drug-drug interaction, use the computerized order system, use the computerized patient information, use the barcoding on the drug containers and medication orders, automated dispensing on the patient's convenience, standardization and protocols, no error use generic names, use standard equipments, use protocols to complex medication administrations like Preparedness. Prescribing action to reduce the may occur, utilize the pharmacist consultation if allowed, ensure that the drug orders are complete and clear, discuss the medication. Pharmacy consultations or discussion with the pharmacist is very important to minimize the prescribing errors. Discuss the medication changes with the nurses and the staff members. Pharmacy action to reduce the medication error, independent double check method, clarify the focusing order, dispensing medication using government dose ready to be administered from the form whenever possible. The patient name and generic drug nominations and specific dose. Nursing action to be reduced medication and double check the medication calculation, verify the drug orders, have access to the drug and familiar with the operation of the medication. The medication error reporting system should be is already implemented. The internal system, national system, and local system or not system. Medication error reporting programs operated by the different and the pharmacovigilance committees and other forms of the in larger organization and state-wise or sub-organizations which have ability to do that. The role of the pharmacist is very important. Clinical or third pharmacist, staff pharmacist, the medical safety pharmacist, other pharmacists, they take the drug histories information, adverse reaction monitoring, and the drug control management, medical pharmacy and parts. They are as a human, and we can prevent medications errors by vigilant management of the medication. Govind ji, Shyam ji, and Vijay ji. And Jaya जी। टॉपिक खत्म हुआ। कुछ लोगों ने बाद में या जस्ट अभी ज्वाइन किया है, उनके लिए मेरे पास में कोई शब्द नहीं है। टाइम ऑलरेडी बताया गया था और मेरा टाइम अभी खत्म होता है। 6:30 बजे हैं। 5 बजे हमने मीटिंग शुरू की थी।
फिर हमने कुछ मिनट्स तक वेट किया, फिर 6 लोग 6 लोग शुरुआत में आए, फिर एक एक करके लोग चले गए, क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं है इस मीटिंग से। इससे मेरे को ये लग रहा है कि ये जो ऑडिट है ना, बहुत ही खराब जाने वाली है। गोविंद जी, गोविंद जी, श्याम जी, आप सुन रहे हैं? हाँ जी, टॉपिक खत्म हो गया। आपका ध्यान था या नहीं था? टॉपिक खत्म हो गया है और मैंने ट्रेनिंग दी है 60 लोगों में से 4 लोगों को। इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, 4 लोग ही आए सारे। थैंक यू फॉर कमिंग एंड योर ऑडिट इज confirmly on 11th, so I will not be able to change it. ओके, मीटिंग खत्म हुई। आज का जो मीटिंग है वो खत्म हुआ। ओके सर, थैंक यू। जो भी मैंने बातें बोली वो सारे काम करने हैं, चेक करना है अपने एरिया में, जवाब देने हैं जब आपसे पूछा जाए कि कैसे मैनेज करना।